कल स्टैंड्स में हमने इतने अच्छे दृश्य देखे, कमेंट्री बॉक्स में रवि शास्त्री साथ में मौजूद थे। 17 सालों से मैं रवि भाई को जानता हूं। इमोशन हमेशा दिल में कहीं छुपा के रखते हैं, लेकिन कल वो इमोशन रुका नहीं। ग्रेट मोमेंट फॉर द एंटायर रेड्डी फैमिली। आई कैन सी द फेसेस सर, इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर यू टू मीट हिम। बट लेट मी जस्ट टेल यू, he was just sitting, and when Nitish was on 97 and then 99, Ravi bhai took some time to even talk because he had tears in his eyes. Shaz, what were some of the things जिससे इतना इमोशन कल बाहर आ गया? क्योंकि इनके फोटोज दिखा रहे थे पेरेंट्स के, और जो सैक्रिफाइस इन्होंने किया नीतीश को क्रिकेट खेलने के लिए, तो जब वो स्टोरी सुनता है तो फिर मोर इम्पोर्टेंटली जैसा बैटिंग किया उसने, जो कैरेक्टर दिखाया, जो डिसिप्लिन दिखाया, जो एप्लीकेशन, तो इसलिए सिर्फ आप और इरफान बात कर रहे थे, मेरा तो आई वॉज टंग टाइड और आंसू था मेरे आंखों में, और इतना आसान से नहीं आता है आंसू मेरे आंखों में, लेकिन कल देख के मजा आ गया। एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस। आपने बहुत सारे यंगस्टर्स को देखा है, आपने खुद आके ऑस्ट्रेलिया में ऐसे लड़ाई लड़ी है। फॉर अ 21-year-old, फर्स्ट टूर, नंबर 8 पे, बैक्स अगेंस्ट द वॉल, यू नो, वेयर वुड यू रेट दिस नॉक दैट यू सॉ फ्रॉम नीतीश? राइट ऑन टॉप। आज मिला मैं उनसे नीचे, मैं बोला आपके पास दिल है, बहुत बड़ा दिल है, टिकर गट्स से ऐसा खेलने के लिए, और इतना बड़ा क्राउड के सामने, क्योंकि पहले टूर पे काफ़ी इंटिमिडेटिंग है, यू नो, इतना बड़ा क्राउड के सामने, लेकिन जो डिसिप्लिन, जो एप्लीकेशन, जो कैरेक्टर दिखाया, मानना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में वो बस नंबर 7 अभी नहीं भेजो यार, पहले 6 में भेजो उनको। इनका काफ़ी रन होना चाहिए अभी टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि ऐसा जब दिखाता है कोई कैरेक्टर, मज़ा आता है। पूरा कंट्री को उठा दिया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, सनी तो एकदम यू नो खुश होंगे कि लड़ाई दिखाया, यू नो, फाइट दिखाया इंडिया में। पहले मैं मिलने देता हूँ सनी सर आपको। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। वेल डन। आपने बहुत क्रिकेट देखा भी होगा, आपने कमेंट्री में सुना भी होगा। ये भी एक शायद सपना होता है कि आपका बेटा खेल रहा है भारत के लिए, और वो शख्स जिनके नाम पे ये ट्रॉफी है, जो हमारे इतने बड़े लेजेंड हैं, उनको इतना इम्प्रेस किया है। इट मस्ट जस्ट बी लाइक अ ड्रीम दैट कैरीज ऑन टुडे आल्सो। सर But anyone, even if you want to just answer in Telugu, you know, just what has it been like from last evening till all the way this morning? సార్ ఈరోజు నేను ఒక తెలుగువాడుగా నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను. ద క్రికెట్ లెజెండ్ బోర్డర్ గవాస్కర్ సార్, రవి శాస్త్రి, ఇలాంటి వాళ్ళ దగ్గర రావడం నిజంగానే నేను పూర్వం జన్మలో చేసుకున్న పుణ్యంగా భావిస్తున్నాను. ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చానంటే నా కొడుకు నితీష్ కుమార్ రెడ్డి వల్ల ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. నేను మీ అందరికీ సార్, మీకు కూడా చెప్తున్నాను, చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఒకే ఒక స్టేట్మెంట్ వల్ల ఈరోజు మా అబ్బాయి ఈరోజు ఈ 4th టెస్ట్ ఆడుతున్నారు. అది నేను చదివాను, చూశాను. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్. इनका सेक्रीफाइस आप जानते हैं कि कितना बड़ा इन्होंने सेक्रीफाइस किया, और आपकी वजह से मेरे आंखों में आंसू आ रहे। आपकी वजह से भारत को एक हीरा मिला है, क्रिकेट का हीरा मिला है। You've got his bubbly sister. Can you translate a little more for us what your father just said? We could sort of understand the emotions. Can you translate a little more for us? My father is very happy that everyone who supported, he is thanking everyone. Name by name, he is thanking everyone. That because of everyone, we are here. Because of Nitish, we are here. Because of my brother, we are here. And we'll be always thankful to everyone. कितनी पर्सनल लगती है सनी सर आपको ये कहानियाँ? ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, ये इंडिया के इतने बड़े लेजेंड के नाम पे ट्रॉफी है. हाउ पर्सनल, सीन यू इमोशनल अगेन. I've always seen a youngster who gets you excited, but to get you this emotional, आपके लिए कितना पर्सनल है ये? देखिए, पर्सनल क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया, हमारे पेरेंट्स ने भी सेक्रीफाइस किया सब। तो जब पेरेंट्स सेक्रीफाइस करते हैं तो, और जब उनका बेटा या बेटी सफल हो जाती है, तो एक आनंद सा होता है, गर्व सा भी महसूस होता है। और वैसा ही मेरे साथ हुआ। आपने शायद देखा होगा कि जब नीतीश की सेंचुरी हुई तो मैं कमेंट्री कर रहा था और बहुत आनंद हुआ। दुख भी होता है जब हमारे जो मतलब इतने टैलेंटेड जो खिलाड़ी है, कभी कभी ऐसे विकेट गंवा देते हैं।
पर वो नहीं किया नीतीश ने। नीतीश ने जिस तरह से इस पारी को संभाला, वॉशिंगटन के साथ जिस तरह से उन्होंने अपनी पारी मतलब जो साझेदारी बनाई, जिससे भारतीय टीम जब खतरे में थी तो खतरे में से बाहर निकालकर अब एक आउटसाइड चांस दिया है कि अगर हमारे गेंदबाजों ने अगर फटाफट विकेटें भी ले ली और शायद 270 के करीब टारगेट अगर हो तो वो हम वहाँ से हम मैच भी जीत सकते हैं। तो यही तो मतलब ये सब देखकर तो आनंद तो होता है। और ख़ास करके जब देखिए पेरेंट्स जब कुछ करते हैं ना और बेटा या बेटी करती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस उसी की वजह से इमोशनल हुआ। बहुत खूबसूरत सनी सर, ये शायद इन नम आंखों से ये जो आंसू है ये आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद है इन सभी क्रिकेटर्स के लिए। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मैम, आई कैन सी यू इफ यूड लाइक टू मे बी टॉक इन तेलुगु समथिंग आपने, बिकॉज हमने सर को देखा, वी सॉ व्हाट वाज इट लाइक फॉर यू, इफ यू कैन जस्ट आस्क हर टू शेयर योर इमोशंस। సరే ఇంతమంది లెజెండ్స్ నోట్లో నుంచి మా బాబు పేరెంట్ అంటే నాకు మాటలు రావట్లేదు, టెన్షన్గా ఉంది అసలు వీళ్ళందరూ. She never imagined like she will be in this place with these legends and she's not getting any words to speak. She's Like- very happy and she's unable to express it all out. చాలా ప్రౌడ్, వెరీ ప్రౌడ్ ఫీల్ అండి. ఈ ఆస్ట్రేలియా గ్రౌండ్లో బాబుని ఈ స్టేజ్ మీద చూడడం చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. అసలు కళ నిజం అన్నట్లుంది. గ్రౌండ్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ It's like a రాగానే dream come true for them. గ్రౌండ్లో ఇంత గ్రౌండ్లో బాబు ఆడుతున్నాడంటే నాకు అసలు నమ్మలేకపోయాను అసలు. She's unable to believe even now that my brother is playing in this big ground, such a big innings. Let me just lighten up the mood a little bit and just say कि नीतीश कुमार रेड्डी अब तक एक मम्मी और डैडी थे। इस समय पूरे घर, पूरे भारत में जितने शायद घर होंगे और जितने माँ बाप होंगे, जितने क्रिकेट प्रेमी होंगे, अब सबका बेटा नीतीश सबका लाडला बन गया है, पूरे भारत के परिवार में आ गया है। You tell me a little more about him, because you know after all those emotional moments and all of that, brother and sister, they share a great relationship. What were his feelings after that? Is it sinking in for him? Yeah. We are all I would like tensed. to ask, it must be sinking in. Does it trouble you? Of course, that brother-sister bond is like that. The Tom and Jerry kind of bond will be always there. But still, we love each other from inside. We don't show it out much, but we love each other. And I am very, very, very proud sister now. And he always used to say, "I'll make you proud one day," and he just made us yesterday is that day for us. And just tell me one more thing about him, you know, just the character. It's been a long journey, and this is what we say, that parents put their own dreams aside and then start dreaming with the child. Was he always confident? Was he always, because he looked so prepared for these big moments, so just tell us a little more about him. Was he always dreaming? Was he visualizing these things? No. At the beginning, he was just like all other fanboys, all other cricket boys. But his mindset, his discipline, and his changing. He changed his mindset. He just settled for discipline, and that made him come here. That was his journey. That made his journey this long, and it will make more long, I guess. Fantastic. We are hoping so. We are all hoping so. Everyone in India is hoping so, and we've seen the start of something fantastic. Please enjoy your moment. Get your photographs. This is, I'm not going to say once in a lifetime opportunity because it started, and hopefully these moments will keep coming in. Please, thank you so much for talking to us. Please take this photograph. ప్లీజ్ సార్, యువర్ లెజెండ్. నితీష్ని ఇంకా మీరు దీవించాలి, మీ సపోర్ట్ ఇంకా భగవంతుడు ఆయన ఆరోగ్యం ఉంచాలని. సార్ 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 సార్